continue. We'll probably finish the chapter today. Yeah, so here we are on the relationship between the delta G and equilibrium constant, and also we have to discuss about third law of thermodynamics. Okay, also we have to discuss about what the third law of thermodynamics. So let us talk about the delta G and equilibrium constant. Let's consider a reaction. Now in equilibrium, like our next chapter is going to be equilibrium. Okay, so again, I would like the 12th standards also to join in, although half of your HSC students, half of equilibrium is in 11th and half of equilibrium is in 12th. But still, I would, if y'all are having time at 8 o'clock, so every day at 8 o'clock after thermodynamics finishes, I would like you all to connect for equilibrium also. That's going to be our next chapter. Okay, so equilibrium, in that equilibrium chapter, you're going to understand. Now, excuse me, sir. Yes. So, we have exams like Bishop Ice from 16th of, actually 18th of October. So, sir, like all our chapters are done, only two are left, like redox reaction and hydrocarbons. So, could you please take one of those? अच्छा ठीक है, चलो वैसा देते हैं, और जब इक्विलिब्रियम चालू करूंगा मैं, then I'll call the 12 standards again to join us. Okay, क्योंकि इक्विलिब्रियम is important. Okay, and कौन सा बताया आपने, हाइड्रोकार्बन्स और redox reactions, बाकी के हो गए ये पोर्शन में. Okay, fine. Okay, fine. Yeah, Irisha, are you here? Yes, sir. Yes, Irisha, which chapters are you having? You are also, I mean, are you there in the same school or? Yes, sir, I'm in Bishop's camp. Yeah, so same chapters for you as well. Just check because you've joined in late, so just check the chapters have to be revised also with you. Okay? Okay, sir. So yeah, and let me know so that we can finish your syllabus in before time. Okay? So A plus B, okay, is giving you C plus D. So ये यहाँ पे चला गया थोड़ा C plus D, and this small a, small b, small c, small d. What is this? This is your stoichiometric coefficient. जैसे हम लोग लिखते हैं ना N2 plus 3H2. So that 3H2, 3 क्या है? 3 is an, बोलो ना, 3 is a stoichiometric coefficient. क्या है 3? 3 is a stoichiometric coefficient. ओके, सो ये जो स्मॉल लेटर्स है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो इसमें एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे QC दिया है, इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट दिया है यहाँ पे. तो ये इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट क्या है? इट इज फाइंडिंग आउट द इक्विलिब्रियम. अभी ये सब आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब मैं सिखाऊंगा तो डिटेल समझ में आएंगे. तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ मास एक्शन नाम का एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें कहा जाता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है? C और D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो A एंड B डिनोमिनेटर में ले लिया, एंड रेज टू C, रेज टू D, रेज टू A, रेज टू B क्या है? रेज stoichiometric coefficients. Okay, and then here if the reactants are gaseous, अब ये तो liquid reactants की बात कर रहे थे, liquid and solid. तो वैसे भी ये इक्वेशन में हम लोग प्योर लिक्विड्स और प्योर सॉलिड्स को इंक्लूड नहीं करते थे. अगर आयंस है तो ही लेंगे इस फॉर्मेट में, और अगर गैसेस है तो उसका पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा. क्या लिया जाएगा? उसका पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा. एंड व्हेन वी आर टेकिंग पार्शियल प्रेशर, सो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू स्मॉल d. स्मॉल d क्या है? अगेन देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. तो अगर गैसियस है तो विल टेक पार्शियल प्रेशर, और अगर आयंस है तो विल टेक this format of the equation. सर अगर प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स है तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड तो इक्वेशन में लेना ही नहीं उसको.
right? You will not take that in the equation. Numerator and denominator में नहीं लेंगे. Okay, so this is how we are using. We'll be learning this in detail when we talk about equilibrium. So when the reaction reaches equilibrium, ये instantaneous equilibrium का QC और equilibrium, original equilibrium जो है वो KC, and then when your QC and KC become equal, that means the reaction achieves equilibrium, and the concentration and partial pressure also reach equilibrium values. The concentration and partial pressure will also reach what? Equilibrium values. Okay, then when reactants products are not in the standard states. Okay, so here we are having change in Gibbs free energy is given, and the change in Gibbs free energy is delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q, that is natural log Q. Okay, so relationship between delta G and equilibrium constant. So this is a relationship between delta G and equilibrium constant where we are having delta G naught plus RT natural log Q. अभी कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर टेंशन मत लो, क्योंकि ये चीज हमको इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने रिपीट करनी है. ओके, वी आर गोइंग टू रिपीट इट इन द इक्विलिब्रियम चैप्टर. सो जस्ट रिलैक्स, अभी जो है सिर्फ लिख लो, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जस्ट राइट इट, सिंपल है. पहले डेल्टा जी के कुछ इक्वेशंस है, लाइक डेल्टा जी का पहला इक्वेशन था हमने डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. फिर और एक इक्वेशन है minus 2.303 RT natural log to the base 10 Q. So उसी का इक्वेशन, उसी का मॉडिफाइड इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग. तो डेल्टा जी के 2-3 इक्वेशन मैं आपको लिख के देता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन. ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूँ डेल्टा जी के कुछ इक्वेशंस यहाँ पर. ओके, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये एक इक्वेशन जो हम लोग ने इसके पहले देखा है, डेल्टा जी का इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन. देन डेल्टा जी इज आल्सो इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. ओके, माइनस आर टी एल एन के. तो अभी नेचुरल लॉग को अगर हम लोग, आपको तो पता है नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है. सो माइनस 2.303 RT log to the base 10 K, और K is equilibrium constant. K is equilibrium constant जो वहां पे लिखा था ना, K Q is equal to K. Q is the instantaneous equilibrium, K is your final equilibrium. Okay, जैसे आप किसी को फोन करते हो, आपके फ्रेंड को फोन करते हो, भाई किधर है तू? हाँ मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ. ठीक है, तो पहली बार वो आ रहा है आपके घर, तो वो अभी जहां पर है वो उसका Q है. अभी कहां तक पहुंचा? अरे बस चौक में हूं, तो चौक में है अभी, वो उसका इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है, और से फॉर एग्जांपल आपका ये रोड है और आपका घर, आपकी बिल्डिंग जो है यहाँ पर है, तो वो बंदा यहाँ पर इस चौक में है, यहाँ पे राइट, दिखाई दे रहा है आपको? देखो इस चौक में है वो, राइट. कौन? आपका फ्रेंड, राइट. देन बोल रहा है आ रहा हूं, तो उसको एड्रेस पता नहीं था, वो गलती से क्या हो गया, आगे चला गया. तो वो अगर इधर चला जाता है तो नाउ Q, यहाँ पे पहले क्या था, QC was less than KC. QC की वैल्यू कम थी, पीछे था ना वो, QC was less than KC. अब आगे आ गया, तो आगे आ गया तो QC has become, ये सब अभी इक्विलिब्रियम में सिखाना चाहिए बट जस्ट एक इंट्रोडक्शन देके रख देता हूँ. QC will become greater than KC. अभी QC सरपास हो गया, जहां पे बिल्डिंग पे यहाँ पे पहुंचना था उसने, बट यहाँ से भी आगे चला गया वो, राइट, यहाँ पर चला गया. तो QC has become greater than KC. बट आपने बोला अरे यार तू आगे चला गया, तो पीछे पीछे थोड़ा यू टर्न ले, हाँ पीछे, राइट. जब पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा, QC will become equal to KC. This is the time when the instantaneous equilibrium is equal to the final equilibrium. So this is called as the system, or your friend has reached your house, it has become equal. Or you can consider this as a class. You're coming to a class now, you will be coming because we're getting permission from October onwards, 4th October. तो आप यहाँ पर आओगे जब, so that time you are having what, right, you will reach the class, that time you have achieved the equilibrium. QC has become equal to what, KC. आ रही बातें समझ में? ये हेलो, जिंदा हो? समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्या? और ये अभी हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स को, ये थर्मोडायनामिकल इक्वेशन, ये थर्मोडायनामिक्स को इक्विलिब्रियम के साथ कनेक्ट किया.
और ये तो इसी का डेरिवेटिव है, ये इक्वेशन इज डेरिवेटिव ऑफ दिस ओनली, सिर्फ नेचुरल लॉ को लॉग टू द बेस टेन। और जब भी मैं डेल्टा जी को यानी कि थर्मोडायनेमिक्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ कनेक्ट करता हूँ, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को, राइट, सो दिस इज द इक्वेशन, राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई सेल, माइनस एनएफई नॉट सेल, सो दिस इज योर कनेक्शन ऑफ Gibbs free energy with connection of Gibbs free energy with electrochemistry. So connection of Gibbs free energy or thermodynamics with, in thermodynamics only, connection of thermodynamics with equilibrium, connection of thermodynamics with electrochemistry. Okay, are you understanding this? Yes. Hello, सुन रहा है ना तू? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So let's go back to the PPT. Yeah, have you written down this equation? चेक करो, लिखा है क्या आपने? Yeah, done. Yes. Are you done with this? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So come on, let's move on to the next slide now. हाँ, तो ये इक्वेशन में देखना, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, QC is equal to your KC and then delta G will be equal to 0. देखा है हम लोग ने पहले, डेल्टा G की वैल्यू जब 0 रहती तब it is in equilibrium. डेल्टा G पॉजिटिव रहता है तो रिएक्शन will move in the opposite direction, non spontaneous. डेल्टा G नेगेटिव रहता है तो रिएक्शन will move in the forward direction, that is spontaneous. तो वो हम लोग ने देख के रखा है. Okay, so that is what at equilibrium क्या हो जाता है, डेल्टा G 0. और in other words, जब डेल्टा G 0 रहता है तब रिएक्शन किस में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती. ओके, जाओ आगे. Yes. Yeah, see over here, a relationship, continuing relationship between delta G and equilibrium constant. So delta G is equal to delta G naught RT, natural log Q था. अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा G 0 हो गया. क्या दिखाई दे रहा है आपको, डेल्टा G क्या हो गया, 0 हो गया. कब, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में. तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग के. डेल्टा G नॉट को उस तरफ भेज दिया हम लोग ने, और उस तरफ भेजते तो इसके ऊपर माइनस साइन आएगा, बट वो माइनस साइन मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो इट बिकम्स माइनस RT ln के. तो इसके लिए मैंने आपको जो इक्वेशन लिख के दिया था, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के, और ln को हम लोग ने नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया तो माइनस 2.303 आ गया. तो डेल्टा G नॉट, वहां पे नॉट लिखना भूल गया था मैं, बट इट इज डेल्टा G नॉट इसी. नॉट मतलब क्या, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी. स्टैंडर्ड मतलब क्या सर, स्टैंडर्ड मतलब मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. So delta G naught is equal to minus 2.303 RT log the base 10. Okay, so this is your relationship between delta G and the equilibrium constant. आ रहा है क्या समझ में? हेलो, Yes, sir. जाना है आगे. ये log to the base 10 K यहाँ पर लिखा है, ठीक है. ये K शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है. log to the base 10 K है यहाँ पर, ये थोड़ा बॉक्स के बाहर गया है इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है, बट है वहां पर K, राइट. अगर आप सामने बैठे रहो होते तो आपको दिखाई देता, बट कैमरा में वो चीज कैप्चर नहीं हो रही है. ओके, नजदीक से दिखाओ क्या.
दिख रहा है क्या अभी? अभी भी नहीं दिख रहा। देखो ये वाला K है इधर। ओके, सो दैट इज नेचुरल लॉक टू द बेस 10 K। जाना आगे? Let's move on to the next slide. Yes, sir. Yeah. Now, third law of thermodynamics. Now, the entropy of a purely crystalline substance, purely and perfectly crystalline substance, is zero at absolute zero of temperature. यानी कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दो चीजें, दो तरीके के सब्सटेंसेस रहते हैं। एक अमॉर्फस रहता है और एक क्रिस्टलाइन रहता है। अमॉर्फस कौन है, क्रिस्टलाइन कौन? ओके, अमॉर्फस सब्सटेंस आपके किचन में लेके चलते हैं आपको, ठीक है, वहां पर आपको बताते हैं कि अमॉर्फस कौन है, क्रिस्टलाइन कौन है। किचन में आप जाते हो, आप फ्लावर यानी कि आटा देखते हो, राइट? तो आटा कैसे, आटे के पार्टिकल्स दे आर इरेगुलर इन शेप। कैसे रहते वो? दे आर इरेगुलर इन शेप। इरेगुलर इन शेप मतलब आटे के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखोगे आटे के पार्टिकल्स को, तो दे विल ऑल बी हैविंग डिफरेंट शेप्स। इरेगुलर शेप है, किसी हर एक का शेप अलग है, कोई भी दो पार्टिकल्स के शेप सेम नहीं है, इरेगुलर शेप दिखाई देगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू हैव अ लुक एट शुगर, तो शुगर बाहर से भी वो क्यूब है, राइट, और अंदर से भी क्यूबिक है। मतलब ये बाहर से शुगर क्यूब है और उसके अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर भी छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स है। समझ में आ रहा है? उसका यूनिट सेल जो है, अरेंजमेंट जो है अंदर क्यूबिक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. ग्राफ पेपर एक बड़ा स्क्वायर है, वो बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, वैसे ही ये पूरा शुगर क्रिस्टल है, उसके अंदर भी छोटे छोटे यूनिट सेल्स है, वो भी क्रिस्टलाइन है, वो भी क्यूबिक है। तो यथा यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडी, ऐसा एक संस्कृत में एक बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसा एटम है वैसा ही सोलर सिस्टम है ना, वैसा ही यूनिवर्स है, तो ऐसा बोला जाता है, राइट? तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक ड्रॉप सॉल्ट नहीं, सी वाटर का एक ड्रॉप अगर टेस्ट करते हो तो वो सॉल्टी, राइट? और पूरा समुद्र भी पी गया कोई तो भी क्या है, सॉल्टी, राइट? पूरा समुद्र पीने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं है, राइट? तो समुद्र का एक ड्रॉप टेस्ट कर लिया तो पूरे समुद्र का टेस्ट पता चल गया। वैसे ही इसके एक यूनिट सेल का अगर स्टडी कर दिया तो पूरे क्यूबिक क्रिस्टल का पता चल गया। तो जैसा ये है वैसा ही पूरा क्रिस्टल, क्योंकि ये इसका क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर अभी इसमें ये जो इसकी अरेंजमेंट है, किसकी, इसकी यूनिट सेल्स की अरेंजमेंट है, वो अगर परफेक्ट है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट्स अ प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अगर ऐसा है प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर the entropy will be zero. At absolute zero of temperature, the entropy is going to be zero. That is third law of thermodynamics. क्या बोल रहा है थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics? कि अगर ये perfectly crystalline है, मतलब इसमें डिफेक्ट ही नहीं है, डिसऑर्डर ही नहीं है, तो डिसऑर्डर नहीं है तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा at absolute zero of temperature. Okay, so at absolute zero of temperature, the entropy of a substance, of a purely and perfectly crystalline substance will be what? Zero. Right? Are you understanding? It will be what? Zero. आ रहा है कुछ समझ में? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is about what? Third law of thermodynamics. Let's go back. तो ये लास्ट पार्ट आपका, लास्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? फर्स्ट लॉ was matter Conservation. can neither be, yes, matter can neither be created and energy also can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to the other form. ऐसा था। फिर मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ किया हमने। मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ आइंस्टाइन ने निकाला क्या, E equal to mc square, energy can be converted into mass, but and mass also can be converted into energy. दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ओके, energy can be converted into mass can be converted into energy, modified first law. फिर सेकंड लॉ,
a temperature can only, a heat can only flow from a hotter body to a colder body, colder in a unidirectional way. Colder body to hotter body is not possible. और अभी third law आपके सामने, third law क्या है? Entropy of a purely crystalline substance is zero at absolute zero of temperature. Okay. ये -273 डिग्री सेल्सियस नहीं है. Absolute zero of temperature will be in 0 degree Celsius. मतलब 273 Kelvin. Right? 273 Kelvin. -273 अलग हो जाएगा. 273 Kelvin. Okay. Understood this? So S is also equal to 0 and T is also equal to 0. अब थोड़े से MCQs है इसके ऊपर, वो आंसर करो and then we can stop because this chapter will finish. Relation between delta G and K. तो delta G और K के बीच में जो relation है, that is delta G is equal to -2.303 RT ln K. ये नहीं ln नहीं, इधर log to the base 10 आना चाहिए. तो log to the base 10 किधर है? यहाँ पर है. तो ये इसका आंसर है. Right? Then the entropy of a perfectly crystalline substance is 0 at absolute zero of temperature. So answer is 0. And here we finish. What have we finished? Thermodynamics. Okay. So from tomorrow, tomorrow for 11th standard will be starting with hydrocarbons. Okay. और उसके बाद में जब equilibrium में शुरू करूँगा, तो मैं आपको 12th standards को भी बुलाता हूँ, तो ताकि आपका भी revision हो, because equilibrium is an important pillar of physical chemistry, जो आपके entrance exams में भी बहुत बार आपको पूछा जाता है. Okay. So fine, we'll stop over here. I hope you all have understood and enjoyed this chapter. Good evening and thank you all of you. Good evening and thank you, Good sir. evening. Good evening and thank you, sir. Good evening. Thank you, sir.